जैसे सूरज यंगडे एट हार्वर्ड कैनेडी स्कूल इज द मेन दलित, मैनी अदर दलित्स। और फिर दलित्स को और ब्लैक्स को जोड़कर उन्होंने ये निकाली थ्योरी जिसको अब क्रिटिकल कास्ट थ्योरी कहते हैं। अब क्रिटिकल कास्ट थ्योरी है कि जो दलित हैं दे आर लाइक द ब्लैक्स ऑफ इंडिया, और जो नॉन दलित्स हैं दे आर लाइक द वाइट्स ऑफ इंडिया, एंड इंडिया इज अ रेसिस्ट सोसाइटी। दिस इज थियरी, social theory, latest social theory, being applied to India, being exported to India, being adopted in India. In the Indian version, Dalits are oppressed, minority religions are oppressed, LGBTQ are oppressed. इस तरह के जो oppressed groups हैं उनको इकट्ठा करके give them, call them protected communities, उनके against नहीं कुछ हो सकता, and give quotas and all. And then the problems of society belong to the oppressor, which is the Hindu people. Punjabi Jats have been put in that category, that they are in danger in India. Their life is in danger. They are being oppressed. Lot of propaganda is being generated to feed this rhetoric, this narrative. Uske consequence kya hai, and why are they doing it? Because under Canadian law, you can get a special visa very quickly. You can get a special visa very quickly if your lawyer applies that my client is part of this oppressed community, he is a protected community member, and his life is in danger, and he has to give one or two examples. कोई story and अखबार में निकला, किसी को कुछ हो गया, किसी ने किसको कुछ मर्डर कर दिया, क्या कर दिया, वो जाट था इसलिए जाट्स की डेंजर है, ये वो ऐसे करके. It is very easy to get quick visa. This is express lane how to get visa. Otherwise, it's a very more difficult job. But if you want to get a lot of people visa, this is the way you consider that community to be oppressed. Convince the Canadian government. Once the ठप्पा is there, जैसे यहाँ पर SC ST को classification में जो जिसका नाम आ जाए तो उसका फायदा होता है, उसको कोटा मिल जाता है. Similarly, immigration quota in Canada is available to anybody who's listed as one of these oppressed communities, these protected communities. Social media is run by the same corporate people. And those algorithms which are running the social media, deciding whose post is allowed, who's going to be shadow banned, who's going to be banned, who will be promoted, these algorithms are also driven by narratives. Algorithms are trained by narratives, just like a syllabus trains the school children. And depending on the kind of school, there will be certain syllabus, certain reading materials, certain teachers. Now, the same way machines, the artificial intelligence means that machines are being trained. The algorithms are being trained by some narratives. It's called the data set. The data set is the data from which the training happens. But this data set used to train the algorithms is not pro-India and pro-Hindu and all of that. It is in fact the opposite. भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार कोई भी कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया जाता है। उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए मैं मंचस्थ सभी अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि वो दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भारत के सम्मान और संप्रभुता को विश्व पटल पर अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सीमाओं की सुरक्षा अति आवश्यक है। भीष्म पितामह के शब्दों में देश की सीमा माता के वस्त्र के समान होती है एवं उसकी रक्षा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों और मनीषियों ने इस महत्व को समझा था और इसके पालन के लिए सर्वस्व अर्पित करने के उदाहरण स्वरूप स्वयं को प्रस्तुत किया था। इसलिए भारत अतीत काल से अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए भी सुरक्षित रहा, लेकिन वर्तमान समय में एक बार फिर से भारत की सामरिक स्थिति पर आघात हो रहा है। इसलिए आओ हम सभी राष्ट्र युग धर्म के प्रति अपने कर्तव्य पालन के लिए कृत संकल्प हों।
हमारे मध्य में ब्रिगेडियर कपिल मल्होत्रा जी भी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रिगेडियर कपिल मल्होत्रा जी। हे मातृभूमि, तेरे लिए मरना ही जीना है और तुझे भूलकर जीना भी मरना है। स्वतंत्र वीर सावरकर ने ऐसी पंक्तियां कही थी और सीमा जागरण मंच इन पंक्तियों को चरितार्थ कर रहा है। हम इन पंक्तियों को साकार कर रहे हैं। जैसा कि कार्यक्रम के विधिवत प्रारंभ हो चुका है, अपनी संस्कृति के परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव, अतिथियों का स्वागत, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं अतिथि स्वागत के लिए सर्वप्रथम हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं श्री राजीव मल्होत्रा जी, उनका स्वागत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जी से आग्रह करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। राजीव मल्होत्रा जी एक भारतीय अमेरिकी शोधकर्ता और समसामयिक मामलों के विशेषज्ञ, विश्व की धार्मिक परंपराओं और पूर्व तथा पश्चिम के आपसी सांस्कृतिक टकरावों पर विचार करने वाले प्रखर बुद्धिजीवी हैं। वे कॉरपोरेट जगत में वरिष्ठ अधिकारी पदों पर और नीतिगत सलाहकार की हैसियत से काम कर चुके हैं। सूचना संचार तथा मीडिया के क्षेत्र में एक सफल उद्यमी हैं। व्यापक पाठक और श्रोता वर्ग में लेखक और वक्ता के रूप में जाने माने राजीव मल्होत्रा ने ब्रेकिंग इंडिया और इन्वेडिंग द सीक्रेट जैसी पुस्तकों में अपने विचार व्यक्त किए हैं और मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन कार्यक्रमों के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सदस्य हैं और न्यू जर्सी राज्य की एशियाई अध्ययन शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर कार्य चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका मार्गदर्शन हम सब लोगों के बीच में आज रहने वाला है। बहुत प्रखर वक्ता हैं और जो आज डिस्कोर्स चल रहा है उसमें आपकी पुस्तक ब्रेकिंग इंडिया ये बहुत महत्वपूर्ण उन विषयों को उठा रही है। तो आज उनके विचार हम सबको सुनने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे मध्य में लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व सैनिक सेवा परिषद के और अपनी जो सीमा जागरण मंच का जो मुखपत्र है सीमा संघोष, जिसका आज विमोचन होने वाला है, उसके मेंटोर भी हैं, उसके मार्गदर्शक भी हैं। पीवीएसएम, एबीएसएम, एसएम आदि अनेक मेडल्स आपको सेना के द्वारा प्राप्त हो चुके हैं। बहुत प्रखर वक्ता हैं। अपना एक कार्यक्रम चलता है सीमा संवाद, वो हर कार्यक्रम का संचालन और हर कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति रहती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे मध्य में श्रीमान रविंद्र अग्रवाल जी हैं जो एक व्यवसायी हैं, सफल उद्यमी हैं और सीमा संघोष जो पत्रिका है उसके प्रबंध निदेशक हैं। बहुत सारी सहायता आपके माध्यम से सीमा संघोष को मिलती है समय समय पर। आज हमारे कार्यक्रम उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे मध्य में और भी बहुत कार्यक्रम में उपस्थित हैं माननीय मुरली जी भाई साहब जो सीमा जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, इधर खड़े हुए हैं। माननीय नितिन कोहली जी जो कि प्रांतीय अध्यक्ष हैं सीमा जागरण मंच के दिल्ली प्रांत के, मंच पर उपस्थित हैं। श्रीमान राकेश मल्होत्रा जी भी अपने साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल भदौरिया जी भी हमारे उपस्थित हैं मध्य में। अगला जो कार्यक्रम होने वाला है उसका संचालन आप करने वाले हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर दीप नारायण जी हम सभी के परिचित हैं, इस कार्यक्रम की सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं। श्रीमान डॉक्टर आलोक जी, ऐसे बहुत सारे अतिथि बंधु हमारे मध्य में हैं। तो सभी का नाम लेना अभी कार्यक्रम की समय के मर्यादा के अनुकूल संभव नहीं है, तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। हमारे मध्य में ब्रिगेडियर कपिल मल्होत्रा जी, उनका नाम गलतीवश मुझसे छूट गया था, क्षमा चाहता हूं, हमारे मध्य में हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अब चूँकि कार्यक्रम में बहुत सारी औपचारिकताओं को ना निभाते हुए मैं आज के जो मुख्य वक्ता हैं जिनको हम लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। राजीव मल्होत्रा जी। Namaste. I am delighted to be invited to this place again. I've been here many times in this hall. Sometimes as a friend and sometimes as an opponent also in this hall. But things have changed. So आज मैं ये जो हमारी नई पुस्तक है कुछ महीने पहले निकली थी, स्नेक्स इन द गंगा,
उसके बारे में कुछ विचार करना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। और हमारी 4 और पुस्तकें निकल रही हैं इस महीने में, 4 more नेक्स्ट। तो ये जो स्नेक्स इन द गंगा है, ये है ब्रेकिंग इंडिया 2.0। जो पहले ब्रेकिंग इंडिया पुस्तक थी 10-15 साल पहले, वो ब्रेकिंग इंडिया 1.0 समझ सकते हैं आप, बिकॉज जो उस वक़्त उस समय बातें हो रही थी, अब वो पुरानी बातें हो गई हैं। तो अब नई बातें शुरू हो रही हैं, क्योंकि दिस इज़ द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज़ द एज ऑफ न्यू अपोनेंट्स, नए तरह के दुश्मन पैदा हो गए हैं। पहले जो ब्रेकिंग इंडिया में था, ब्रेकिंग इंडिया 1 में था, वो था कि गरीबों को कन्वर्ट कर रहे थे और गरीबों को माओइस्ट बना रहे थे, ऐसी चीज़ें हो रही थी। लेकिन जो इलीट लोग थे, जो इलीट कॉलेजेस में, अशोका यूनिवर्सिटी, क्रिया यूनिवर्सिटी, ये इस तरह की जगह में थे, और जो इंडस्ट्री में टॉप सीईओज थे, और जो पॉलिटिक्स में थे, जो नीति आयोग के सीनियर मेंबर्स थे, ये लोगों को पीछे नहीं जा रहे थे। ये लोग देवर ओके, उनके पीछे नहीं जा रहे थे। ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस सिर्फ जो लोअर लेवल लोग थे, इनकम में, एजुकेशन में, रूरल एरियाज़ में, गांव में, उनके पीछे जा रहे थे। अब ब्रेकिंग इंडिया 2.0 इज़ गोइंग आफ्टर द एलीट्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया की पावर स्ट्रक्चर के टॉप लोग हैं सब एरियाज़ में, उनको कैसे उनके मन में जा रहे हैं, कैसे उनमें भेद डाल रहे हैं, एंटी नेशनल फीलिंग्स डाल रहे हैं। और ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, बहुत सटल तरीके से हो रही है, अभी तक इंडिया में लोगों को समझ में नहीं आई। तो उसके बारे में ये बुक है, स्नेक्स इन द गंगा, क्योंकि गंगा में आपको शक नहीं होता कि यहाँ भी कोई जहरीले सांप होंगे। तो उसका मतलब ये, मेटाफर का मतलब ये है कि आपको जहाँ पर आप समझते हैं सेफ है, वहाँ पर भी ऐसे लोग हैं। दे आर द स्नेक्स वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये इसकी एक आइडियोलॉजी भी है, नई आइडियोलॉजी है जो पहले नहीं थी। जो आइडियोलॉजी अब है वो भी मार्क्सिज्म से जुड़ी हुई है, लेकिन इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ मार्क्सिज्म। पहले दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मार्क्सिज्म वाज नॉट देयर। सो ये एक लेवल पर समझना होगा। दूसरा, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं बाहर भी और भारत के अंदर भी जो इसमें लगे हुए हैं, वो ये भी समझना होगा। और उसका क्या नतीजा क्या है, क्या इफेक्ट क्या है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस स्नेक्स, ये जो है ये भी समझना होगा। सो आई विल फर्स्ट गिव यू सम shocking information. Shocking. One is that I will tell you how the Khalistan movement in Canada is related to this new ideology I'm talking about. इससे क्या संबंध है? And this big international wave saying कि Islamophobia should be made a crime. Crime. कि मतलब आपने इस्लाम के विरुद्ध कुछ कहा तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। दिस इज़ नाउ ए बिल बिफोर यूएस कांग्रेस एंड सेनेट। यूएस कांग्रेस में तो पास हो चुका है, सेनेट में अभी नहीं आया। दिस इज़ इन वेरियस यूरोपियन यूनियन एंड यूएन हैज़ ऑलरेडी डिबेटेड इट एंड एनैक्टेड वन फॉर्म ऑफ इट। सो ये कहाँ से आ रही हैं बातें? एंड दिस BBC का अटैक हो गया, रानी का हो गया, ये जो चीज़ें, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम? इट इज़ नॉट इनफ टू मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल कि ये लोग हैं। लोग तो द पीपल यू कैन लिस्ट आर जस्ट ऑन द सरफेस, पर इसमें आइडियोलॉजी क्या है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट टू यू, एंड देन इट विल मेक सेंस व्हाई सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस, इवन दो दे लुक लाइक डिफरेंट पीपल। why are they involved? उनकी ideological, what is common? So first thing you have to understand is that Marxism, which was European बात थी Marxism, यूरोप से पैदा हुई। After World War II it became Americanized. This is something most people here do not know. Yesterday I gave a talk at the ICSSR, Indian Council of Social Science Research. J.K. Bajaj, who's the chairman, was sitting there. Member secretary was sitting there. And I told them also, India में जो social scientists हैं, new government, old government जो भी हैं, they still have not understood this point. वो रिएक्ट करते हैं जब हमको गोली लगती है, तो फिर वो रिएक्ट करते हैं, उसके पहले वो पहचान नहीं पाते कि कौन क्या कर रहा है। They have no idea of what is yet to come. They can't anticipate, वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते।
So this Americanization of Marxism happened because Marxism was not about race. Marxism was not about race. It was about economic. गरीब लोग, अमीर लोग. It was more economic disparity के बारे में थी. So now Marxism became adapted, Americanized for blacks versus whites, race. And Marxism says that those who are the oppressed, they should be called protected communities, protected categories. मतलब उनको खास रक्षा होनी चाहिए उनके लिए, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, विच इज ट्रू. और जो ऑप्रेसर हैं, जो उनको दबा रहे हैं, उनको कैंसिल कर देना चाहिए, कैंसिल कल्चर, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए. सो ये जो मार्क्सिज्म की आइडिया है, दिस बिकेम अप्लाइड टू रेस इन अमेरिका आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, एंड दिस थ्योरी बिकेम नोन एज क्रिटिकल रेस थ्योरी. जो क्रिटिकल रेस थ्योरी थी, पहले तो इट स्टेड इन द बैकग्राउंड, not too many people were bothered, but in recent years, because of this Black Lives Matter movement, this critical race theory became very important and became very popular, and everybody accepting it, large number of people accepting it. So this critical race theory is basically saying कि जो पहले के institutional structures हैं अमेरिका में, institutional structures mean जो भी society है, constitution है, laws हैं, हिस्ट्री है, जो कुछ भी हमारे ट्रेडिशंस हैं यूएसए में, उनको तोड़ना चाहिए बिकॉज दे वर मेड बाय द ऑप्रेसर्स. जो कुछ भी ऑप्रेसर ने क्रिएट किया उसको तोड़ना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट अमेरिका. इसमें इंडिया का क्या वास्ता? इंडिया का वास्ता ये है कि ये जो क्रिटिकल रेस थ्योरी है, इसको अब इंडियनाइज कर दिया गया है. सो फर्स्ट बिग स्टोरी आई एम टेलिंग इन दिस बुक इज द अमेरिकनाइजेशन ऑफ मार्क्सिज्म. तो पहली कहानी है. दूसरा मेन पॉइंट है द इंडियनाइजेशन ऑफ क्रिटिकल रेस थ्योरी. ये जो क्रिटिकल रेस थ्योरी अमेरिका के लिए बनी थी, रेसिज्म के लिए, अब वो इंडियनाइज हो गई है. इंडियनाइज कैसे हुई? इंडियनाइज इसलिए हुई, हार्वर्ड ने एक, पहले तो अमेरिकनाइजेशन हार्वर्ड में हुई थी. क्रिटिकल लीगल थ्योरी हार्वर्ड से निकली थी, और उनके जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने फिर बाद में क्रिटिकल रेस थ्योरी भी बनाई थी. फिर उन्होंने इंडियनाइज करने के लिए दलित लाए, जैसे सूरज यंगडे एट हार्वर्ड कैनेडी स्कूल इज द मेन दलित, मैनी अदर दलित्स. और फिर दलित्स को और ब्लैक्स को जोड़कर उन्होंने ये निकाली थ्योरी, जिसको अब क्रिटिकल कास्ट थ्योरी कहते हैं. अब क्रिटिकल कास्ट थ्योरी है कि जो दलित हैं दे आर लाइक द ब्लैक्स ऑफ इंडिया, और जो नॉन दलित्स हैं दे आर लाइक द वाइट्स ऑफ इंडिया. एंड इंडिया इज अ रेसिस्ट सोसाइटी. दिस इज थियोरी, social theory, latest social theory, being applied to India, being exported to India, being adopted in India by the government also, by the private sector also. I will tell you all that. And then I'll tell you how Khalistan movement benefits from this. So ये जो Indianization of critical race theory है, it is called critical caste theory, and it says that the caste is a form of racism. This is now being put into American law also. Many counties and states and cities, municipalities are making this law. Universities making this law. Corporates being pressured to make this law in USA. Ki caste is a form of racism. So when Indians come to USA, and if a Dalit goes and files a complaint कि ये मेरा बॉस था, ब्राह्मण था या जो भी था, क्षत्रिय था, उसने मेरे against discrimination किया, the mere act of filing the case means that man is in trouble. That man is in trouble because under US laws, these are very serious offenses. Charge of racism is very serious, and the casteism is considered same as racism, so charge of casteism is very serious. ये पहली बात कभी नहीं थी, यह पिछले 2-3 साल की बात है. So this business of saying that Indian society is basically racist society, similar to whites and blacks. These are caste system. Caste is like the same. ये बात Indianization of critical race theory हो गई. This is another very big thing that Indian people don't know and don't understand why it's important to know. So this, because it has been turned into an Indian social structure, Indian theory, अब उसमें अप्लाई करते हैं who are the protected categories. Protected categories means who are the oppressed. So in the American version, blacks are oppressed, Native Americans are oppressed. In the Indian version, Dalits are oppressed, minority religions are oppressed, LGBTQ are oppressed. इस तरह के जो oppressed groups हैं, उनको इकट्ठा करके
give them, call them protected communities, unke against nahi kuch ho sakta, and give quotas and all. And then the problems of society belong to the oppressor, which is the Hindu people. So this is why there was this dismantling Hindutva conference. Some of you probably know. But nobody understood why it is happening, who's doing it, why they're doing it. So I'm telling you the reason why it happened, from where it happened. Now, in Canada, Khalistanis have lobbied to convince the Canadian government and the law in Canada that Sikhs, particularly Jats, are an oppressed community in India. And once somebody is designated as oppressed community, just as Tibetans are oppressed community, they are protected class, Rohingya Muslims, like that. Khalistanis, the Punjabi Jats have been put in that category, that they are in danger in India. Their life is in danger, they are being oppressed. A lot of propaganda is being generated to feed this rhetoric, this narrative. Uske consequence kya hai, and why are they doing it? Because under Canadian law, you can get a special visa very quickly. You can get a special visa very quickly if your lawyer applies that my client is part of this oppressed community, he is a protected community member, and his life is in danger, and he has to give one or two examples. कोई story and अखबार में निकला, किसी को कुछ हो गया, किसी ने किसको कुछ murder कर दिया, क्या कर दिया, वो जाट था इसलिए जाट्स की danger है, ये वो ऐसे करके. It is very easy to get quick visa. This is express lane how to get visa. Otherwise, it's a very more difficult job. But if you want to get a lot of people visa, this is the way you consider that community to be oppressed. Convince the Canadian government. Once the ठप्पा is there, जैसे यहाँ पर SC ST को classification में जो जिसका नाम आ जाए तो उसका फायदा होता है, उसको कोटा मिल जाता है. Similarly, immigration quota in Canada is available to anybody who's listed as one of these oppressed communities, these protected communities. So Khalistanis are now classified as oppressed community in India. I mean Sikh Jats. So this feeds a lot of immigration mafia. The immigration mafia are lawyers, जो fees लेते हैं, politicians. There's a whole lot of people. If you want to bring your Jat member, family member, or some friend from village, then there is a whole procedure. उसको इतना पैसे दो, उसको इतनी फीस दो, ये करो, वो फटाफट आपका काम करवा देगा. This is a whole economy to do this. Now our people have not understood it. We think पता नहीं क्या बात है, क्या हो रहा है. If you don't know the problem, you can't fight it. The problem is this particular ideology and the laws that have been based on this particular ideology. I'm just giving you Khalistan as one example, but this is in many areas now. Khalistan is just one example. So entire villages in Punjab have moved out. And the Khalistanis have, the more they fight the Indian government, the more ammunition and more data they are supplying to this critical caste theory, this critical race theory people in Canada, or more quota is being generated for them. So this is the reason why there's a relationship between this theoretical framework I'm giving you and the ground reality of the threats that India faces. It is not just कि theory की बात है, universities में पढ़ाते हैं पर इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता. इसका फर्क पड़ता है because I'm telling you how it makes a difference. Also, there are laws now being enacted against anyone who is deemed to be Islamophobic. Islamophobic means आपने इस्लाम को क्रिटिसाइज किया, जैसे नूपुर शर्मा ने किया, चाहे इस्लाम वाले उनके अपने शास्त्र में लिखा भी हो, but if you are declared to be Islamophobic by the Islamic authorities, then the law requires that you have to be treated in a special criminal category, and all these sort of things happen to you. So in many countries there are legal bans against Islamophobia, but not against Hinduphobia. Why not? Why not equal treatment of all religions, but only Islamophobia? Because they have lobbied successfully and called themselves an oppressed community. The Muslim community have successfully done that. So this is a very serious, broad issue. And my frustration is that I've been lobbying this I've been trying to explain this to people in India for many, many years.
even before writing these books. And people don't seem to understand it. People don't seem to care about it. They still think it's breaking India 1.0. Missionaries आए उन्होंने ये किया वो किया. But ये नई बात है. This is a new, this critical caste theory is the latest theoretical framework. So now critical caste theory, generated out of Harvard, has further implications. One of the professors at Harvard, Ajanta Subramaniam, wrote many papers for many years and now wrote a book that the IIT system is basically caste-based system to oppress Dalits. So now this is another example. Usme data hai nahi. There's no evidence being given, no facts and figures being quoted, just stories of individual people. Some individual named somebody, some random name, he says this. Somebody says in the cafeteria he was not treated well. Somebody says this. As a few stories and a very emotional allegation against IITs as elitist, Brahmanical. Brahmins oppressing Dalits is the overall story in her book, and many papers she has produced. And this is now, these are best-selling authors published by Harvard University Press, which is the most powerful academic press in the world, part of the Harvard curriculum, and this is being spread from there to many places. So the critical race theory and then critical caste theory have ramifications. उसका impact होता है ground level में, उसका effect होता है, नतीजा निकलता है उसके. क्या निकलता है कि खालिस्तान मूवमेंट बन रही है, दलित्स को एम्पावरमेंट वहाँ से मिल रही है. Modi is considered कि democracy ठीक नहीं है, तो ऐसे गलत democracy है. Because as long as we are democracy, then they can't argue, because we will say that भी democratic laws है, courts are working, political process is working. So they have to prove कि democracy नहीं है ठीक. So this is also where that allegation is coming from. Now, the people in USA who created this critical caste theory and attacked the IITs, they have filed cases against Silicon Valley companies like Cisco, जहाँ पर खूब सारे Indians हैं, खूब सारे tech workers हैं, IT workers हैं. They have filed cases saying कि ये companies जो हैं, ये भी Brahmins को favor करती हैं, and they don't give a promotion and give equal chance to Dalits. So now these lawsuits people have to defend. Cisco is defending a lawsuit filed by some people, Indians only, in the US, who are connected with this Harvard gang. And so now the fear has gone to the whole Silicon Valley. The Microsoft is worried, this Facebook people are worried कि हम हमारे पीछे भी आ जाएंगे. So now these people who have come up with these theories, they are going and conducting caste sensitivity training. उनसे पैसे ले रहे हैं. It's like almost like blackmail. आप हमारा, if you don't hire us, then we'll file a complaint against you. So many of these companies being very rich, it doesn't matter, वो उनको hire कर देंगे, पैसा दे देंगे. It's almost like hush money. उनको पैसा दे देंगे कि आप आके हमको please train कर दो, तो हमारा छुटकारा हो जाएगा, and leave us alone. So this is a big scandal going on right now. And Indian people in the tech industry are feeling very worried. They are very concerned that they're not very safe, because anyone can make an allegation against you, and then your career is finished. So this is now the first story is Americanization of Marxism. Story number 2 is that this critical race theory has become Indianized, applied to Indian society, and called critical caste theory. That is second story. Third story is that this whole thing has come to India, inside India now. It's not sitting only in America. How? Several ways. First, the Indian subsidiaries of Silicon Valley companies, the HR department is asking them to put the same policies in India also. So Microsoft India and Google India and ये वो प्लाने, Amazon India, इनके जो HR departments हैं, they are getting the directions from US headquarters कि ये क्या करना है यहाँ. And now you will begin to see cases in India also, and you will begin to see American corporate sector subsidiaries in India, in the pharma industry, in the tech industry, automobile industry, wherever they are there. And not only there's direct subsidiaries, but people from whom they outsource. They will start putting pressure there
that you have to have quotas, you have to make sure enough people in management are from Dalits and Muslims and minorities and things like that. So that dividing up Indian society, which is I'm calling Breaking India 2.0, is now not happening only in villages, jo pehle ho raha tha, it is also happening in the top level of corporate people in India. So this is a very serious matter. This has to be taken up. Another way that this is coming into India is through universities. It used to be that JNU was considered the biggest problem, but JNU is becoming fixed now, I'm told. The serious problems now are these Ashoka University, these kind of places, Kriya in the south. There are about 15 or 20 of these. Flame University, I think it's in Pune or somewhere in Maharashtra. So इस तरह की जो नई universities बनी हैं, they are now teaching critical race theory, they are teaching all this stuff, critical caste theory. ये जितने भी हार्वर्ड के पढ़े लिखे लोग हैं, they are being brought here to create this whole ecosystem and create a syllabus. Much worse than the JNU reputation in the past are these places today. Much worse than that. And our people are not aware of it. And we are still inviting these kind of people to come. These are the poisonous snakes in the Ganga, because you're not expecting them where they are. You're not expecting that they'll be there. So I've talked about universities being contaminated, industries being contaminated, media and social media. Because social media is run by the same corporate people, and those algorithms which are running the social media, deciding whose post is allowed, who's going to be shadow banned, who's going to be banned, who will be promoted. These algorithms are also driven by narratives. Algorithms are trained by narratives, just like a syllabus trains the school children. And depending on the kind of school, there will be certain syllabus, certain reading materials, certain teachers. Now, the same way machines, the artificial intelligence means that machines are being trained, the algorithms are being trained by some narratives. It's called the data set. The data set is the data from which the training happens. But this data set used to train the algorithms is not pro-India and pro-Hindu and all of that. It is, in fact, the opposite. So the infiltration of this ideology is also through social media, because social media platforms are not Indian people don't control. Indians are supplying the labor. Workers are Indian. Don't tell me कि उस फलानी company में 20,000 Indian है. Who cares? They're just employees. They don't have the power. They don't make the policy. They are just workers. They are laborers. They make a lot of money maybe, and they send money. It's good FDI for India to get all this money, repatriation. But whatever money they may make and however many $1 billion they send here, the fact is उनके जो rights है, उनकी जो authority, उनका जो अधिकार है, वो बहुत कम है, because they're employees. Not if there may be 20, 30, 40,000 Indians in Microsoft, but they don't own any intellectual property of the Microsoft people. That company owns it. And that company is owned by other people. So the tech giants, the big tech giants, and the media and the social media are also filled with this new ideology, Breaking India 2.0, that I have talked about. Now there is also another group of people, very powerful in India, in the corporate sector. These are foreign consultants. Deloitte, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, McKinsey, all the big Sensex companies, जो भी बड़ी-बड़ी companies हैं, वो इन लोगों से advice लेती हैं, उनको audit करवाती हैं, उनसे they required, and जो उनकी ideology है वो आती है इंडिया में. So there are some indexes. आपकी index will evaluate how good you are for investment purposes, how good you are in environment, social justice, governance. ये indexes हैं. These indexes are defined elsewhere. They are not developed for Indian culture. These indexes are developed by people of the left to decide कौन सी company को funding मिलेगी, क्या उनकी share value होगी. Right now they have demoted the index of Adani. Just in 2-3 days ago, they have announced कि Adani का ये जो ESG rating है वो कम हो जाएगी, because he is a bad guy now. So one of the ways to attack is to bring down their index. तो आपकी rating कम हो जाएगी, आपको you have to pay high interest rate to borrow. You are more risky, and आपकी reputation कम होगी. Many funds will not invest in you. So this business of controlling the world free enterprise corporate sector through indexes
And these indexes are controlled by people in certain country, America, UK, and so on. This is another very big colonization of Indian corporate sector being done by, with the same ideology driving the whole thing. So, the final category of people I consider responsible are foolish, myopic Hindus in India. Foolish, myopic, maybe stupid also in Hindus, who are not only complacent, but in fact encouraging this. They will keep telling me like yesterday कि हम वो मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या ही है, सब कुछ माया ही तो है, सब कुछ सेम ही होगा. So this kind of discussion, this kind of very glorifying our vulnerability is a serious problem that we are having. We have to not be afraid of facing problems rather than running away कि भी मेरे को ऐसे कह दिया मैं भाग जाऊंगा. You have to be strong enough to say कि if we have a problem, let's face it and deal with it. So how many of our people really are interested and willing to accept the fact that हमारी कमजोरियों का लोग फायदा उठा रहे हैं? कमजोरी हमारी है, लोग उसका फायदा उठा रहे हैं. तो जो भी कमजोरी है आपस में समझौता कर सकते हैं. But why are we bringing foreign people here to solve our internal problems? This is the problem we have to worry about. This is what we have to think about. So अभी ये जो what I call short-sighted Hindus, they are reacting कि बीबीसी ने कहा तो उसके अगेंस्ट क्या करना चाहिए, बीबीसी को रेड कर दो. ठीक है, वो ठीक है, होना चाहिए जो भी कानून के मुताबिक. सोरोस ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया तो सोरोस के पीछे चले जाएंगे. बट ये तो रिएक्टिव हो गया ना, ये तो इज टू लेट. बाय द टाइम इट हैपेंस इट इज टू लेट. दीज पीपल हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर मेनी ईयर्स. व्हाट यू हैव टू थिंक इज हु इज नेक्स्ट, हु इज डूइंग इट नेक्स्ट. वो हमने लिस्ट बनाई है. वी आर टेलिंग यू हु आर द कल्प्रिट्स जो अभी ऊपर नहीं आए. उनके पीछे यू हैव टू अंडरस्टैंड. उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए. व्हाई आर यू वेटिंग अंटिल समबडी अटैक्स यू? By the time somebody attacks you, I mean you are military people, so you know you don't wait until he attacks you and enters your territory and then try to push him back. You have to also anticipate. You need to have your own surveillance to figure out कि उसका नतीजा क्या है, उसकी planning क्या है, वो क्या करने वाला है, and you have to plan accordingly. So we are not thinking like that. We are just sitting and जब हो गया तो फिर उसका जवाब देखेंगे क्या करना चाहिए. So these are some of the problems I wanted to bring to your attention, and there are 4 or 5 books we have. The big one is called Snakes in the Ganga. जो उसका साइज बहुत बड़ा है, but don't let that scare you. डरना नहीं चाहिए आपको. उसका पहला चैप्टर आप पढ़ लो, 40-50 पेज का चैप्टर वो पढ़ लो. सारी बुक की समरी है, सारी बुक की समरी है. और फिर हर एक चैप्टर के पहले 1 पेज का ओवरव्यू है, समरी. तो हर एक चैप्टर का एक पेज पढ़ लो. That's all you need to read. Read the introduction chapter and one page जो पहला पेज है हर एक चैप्टर का, and you will get a 99%, 98% idea. You will know कि इसमें क्या लिखा है. बाकी जो details हैं वो proof है. That is the evidence. You know, when you make a case in the law, you argue your case, but then you have evidence, you have exhibits, you have forensic evidence, you have all the witnesses. तो वो सारी books में, ये book में evidence भी दिया हुआ है. This is why it is big. But you don't need to read all that. You can only read chapter 1 and introduction to the 1 page overview of every chapter. That is fine. You will understand हम क्या कह रहे हैं. And then if you want, you can read more details any place. One of the biggest surprises in this book is that Indian billionaires are funding all these things at Harvard. So there is a whole chapter on Mittal, Lakshmi Mittal at Harvard. Another chapter on Anand Mahindra at Harvard. Another on Ajay Piramal at Harvard. Bajaj, Tatas, they're all there. Reliance is funding one of the worst professors in the United States, anywhere in the world, one of the worst anti-Hindu, anti-BJP, Modi, RSS, whatever, anything to do with Hinduism, one of the worst professors, Professor Hanson at Stanford. And do you know what his official title is? Reliance Dhirubhai Ambani Professor of India at Stanford. That is his title. So wherever he goes, he puts that, and everybody says, "Ha, Reliance Dhirubhai Ambani Professor, bhai, ठीक होगा." So this, हमने उनको अधिकार दे दिया.
हमने उनको सौंप दिया, वी हैव पुट ऑल दिस क्रेडिबिलिटी, उनको देवता बना दिया। जो सबसे वर्स्ट लोग हैं उनको हमारे लोगों ने ही ऐसे ऊपर चढ़ा दिया। क्यों चढ़ाए? दिस यू शुड आस्क, व्हाई हैव दे डन इट, व्हाट इज देयर बेनिफिट, व्हाट इज देयर मोटिव, व्हाट इज देयर एजेंडा ऑफ आवर ओन बिलियनियर्स। सो यू हैव टू, यू कैनॉट जस्ट से कि उनको मालूम नहीं था, उन्होंने पैसा दे दिया, क्या हो गया। एंड इट इज़ नॉट स्मॉल मनी। मित्तल फॉर एग्जाम्पल स्टार्टेड द सेंटर विद $50 million. Mahindra has given tens of millions of dollars. Tata has given even more. So like that. So why are our billionaires? यहाँ पर तो देशभक्त है and we celebrate them as very patriotic people. पैसा यहीं से बना है. Why are they investing in center which is so anti-India? Why are they doing it? So that has to be inquired. People have to want to find out क्यों कर रहे हैं. So this is a very, this book Snakes in the Ganga tell you all these things. तो फिर इसमें से एक और हमने बुक निकाली है, The Battle for IITs. The Battle for IITs is a response. मतलब जो हमारे IIT के लोग हैं उनको मालूम होना चाहिए कि आप जब नौकरी करने जाएंगे, you might be accused of being casteist. You have to know, you have to anticipate कि हमको हमारे अगेंस्ट कोई ऐसे बोलेगा तो उसको कैसे जवाब देना है. How to reply? Why is he arguing? What is his logic and what is the flaws? We have given in this book. 150 पेज की बुक है, स्मॉल बुक, इट इज़ अवेलेबल आउट देयर. और हम इस ट्रिप में कई IITs जा रहे हैं, IIT कानपुर भी जा रहे हैं, अगले हफ्ते IIT बॉम्बे भी जा रहे हैं. तो वी वांट टू स्प्रेड दिस टू IIT पीपल. वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम IIT alumni in USA, but we want to spread it to all the IIT people here also. And those of you who are interested, 26 फरवरी को हमारी ये बुक लॉन्च होगी एट दी वर्ल्ड बुक फेयर प्रगति मैदान में. ये बुक लॉन्च होगी, द बैटल फॉर IITs, 11 बजे. सो यू आर वेलकम टू कम फॉर दैट, बट द बुक इज़ अवेलेबल हियर ऑल्सो. और एक और बुक निकाली है, वर्ना जाति कास्ट. वो भी ये स्नेक्स इन द गंगा से एक चैप्टर निकाल के उसको एक्सपेंड किया है. क्योंकि जो हमारे यंग IT प्रोफेशनल्स हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, उनको इसके बारे में मालूम नहीं है. उनको ये नहीं मालूम कि सपोज समबडी कम्स एंड गिव देम अ सेमिनार ऑन कास्ट, तो उसमें क्या सच है क्या झूठ है, कैसे जवाब देना चाहिए, उनको मालूम नहीं कि नोबडी ट्रेन्ड देम. आवर पीपल आर टोटली यूजलेस इन दिस. अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे बताया नहीं. तो उनके लिए लिखा है. और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में कॉलेजेस में जाते हैं, कैसा जवाब देना है इन चीज़ों का. अमेरिका जाते हैं, देयर आर few lakh Indian students there. Privately they write to me and say, Rajiv uncle please आके हमको ये बताओ वो बताओ, how can I keep going everywhere here and there. So we've written this book. It's a primer on Indian social history, Indian social thought, and वर्ना जाति कास्ट क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या था, क्या बन गया, कैसे बना, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, ये सारा जो फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू. वो भी छोटी बुक है, 150 पेज की. एंड दिस बुक विल ऑल्सो बी लॉन्च्ड in the World Book Fair on 26th February around I think 1:30 PM. You can come. It will be launched there. ये तो 2 बुक्स होंगी, नई बुक्स हैं. तीसरी बुक है, वो है 10 heads of रावण. रावण के 10 हेड्स. अब वो मेटाफर है. मेटाफर ये है कि रावण का नया जन्म हुआ. रावण हैज़ नाउ बिकम इंटेलेक्चुअल और उसके 10 इंटेलेक्चुअल रूप हैं. 10. तो उसमें एक एक चैप्टर का नाम है. one chapter is Shashi Tharoor, and one chapter is one chapter is Romila Thapar, one chapter is Irfan Habib, one chapter is Michael Witzel, one chapter is Ramchandra Guha, one chapter is Wendy Doniger, one chapter is Audrey Truskay. कुछ अमेरिकन भी है, कुछ इंडियन भी है. सबका नाम है, सब बाय नेम. और जो आर्टिकल लिखने वाले हैं वो हमारे यंग स्कॉलर्स हैं. हमने ट्रेन किया उनके पिछले 3 साल, हाउ टू डू दिस रिसर्च, हाउ टू राइट. किसी को गाली नहीं देनी, किसी को स्लैंडर नहीं करना, पर फैक्ट्स के बेसिस पर उन्होंने जो जो लिखा है और जो जो कहा है उसको कोट करना है अच्छी तरह से, एक्यूरेटली, और उसका जवाब देना है. इट इज़ अ वेरी एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग. इट इज़ नॉट इमोशनल. किसी को आप इफ़ यू कैनॉट प्रूव योर पॉइंट, डोंट राइट इट. ओनली जो आप प्रूव कर सकते हैं कि उसने क्या गलती की वो आप लिख सकते हैं. इस तरह के 10 आर्टिकल्स हैं उस बुक में, और हमने इंट्रोडक्शन लिखी है. और ये इसकी लॉन्च होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑन March 1. 10 हेड्स ऑफ रावण की
लॉन्च होगी और हर एक आर्टिकल को हमारा जो स्कॉलर है वो प्रेजेंट करेगा and one senior person we have brought who will give a commentary. Like General Bakshi will be the one on Aryan theory of Michael Witzel and Ramila Thapar in ke baare mein. And one UN, a person who retired from the United Nations, is visiting India, and he will give his commentary on the chapter on Shashi Tharoor, wo bhi UN mein the. So like that, different people. Madhu Kishwar will be the one giving commentary on chapter on Irfan Habib. So हर एक रावण का जो रूप है 10 रूप है उनके इंटेलेक्चुअल के 10 इंटेलेक्चुअल टाइप्स ऑफ रावण एंड रावण इज नॉट अ बैड मैन रावण इज जस्ट अ पर्सन हु इज अगेंस्ट हिंदू सोसाइटी तो अकॉर्डिंग टू हिम इज डूइंग द राइट थिंग रावण के अपने भी भक्त हैं आई मीन देयर आर पीपल हु डिवोट हु आर वर्शिपिंग रावण आल्सो सो इट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू वी आर नॉट सेंसरिंग एनीबॉडी वी आर सेइंग कि जो आपने कहा उसके अगेंस्ट हम बोलना चाहते हैं हमारा भी राइट है वी आर नॉट स्टॉपिंग यू वी आर नॉट सेंसरिंग यू वी आर नॉट अब्यूजिंग यू वी आर नॉट स्लैंडरिंग यू और बीइंग वायलेंट और एनीथिंग लाइक दैट थ्रेटनिंग यू नथिंग लाइक दैट इज अलाउड वी आर विद प्रॉपर एकेडमिक बैकग्राउंड वी आर ट्राइंग टू गिव ए रिस्पॉन्स जवाब दे रहे हैं हम आपका और ये हर एक आर्टिकल जो है 10 ऐसे आर्टिकल्स हैं उसका एक घंटे का 45 मिनट्स का एक ऐसे प्रोग्राम है नाउ आई ask the organizers, Delhi University में भारत बुक क्लब है, they are organizing this. So I ask the organizers, please invite each of those 10. They should come. Because they should come and listen and they give a jawab. Not one of them is interested in coming. Wendy Doniger wrote a very rude reply कि तुम लोग कौन हो, who are you? हमने वो छाप रख लिया अपने पास. देवदत्त पटनायक ओ नो यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट आई डोंट केयर ऐसे बोल दिया ऐसे 3-4 ने तो ऐसे जवाब दिए हैं कुछ लोगों ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है मैं बिजी हूँ और ज़्यादातर लोगों ने जवाब ही नहीं दिया कुछ भी नहीं किया द रीज़न वी आर डूइंग दिस इज़ टू बी एबल टू से कि हमने आपको बुलाया था आप नहीं आए दैट इज़ योर प्रॉब्लम पर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं हमने आपके बारे में ये लिखा है और जो आपका पोजिशन है आप बताएं वी विल हैव अ प्रॉपर डिस्कशन सो दिस वे वी आर ट्रेनिंग आवर पीपल टू फेस द एनिमी to face them and have the confidence to present your research openly in the public, defend your research, and if they are criticizing you, that is part of being a Kshatriya, you have to defend your position and argue back and do it in a decent, respectable way. This is what we are trying to do. That is our 3rd book which we are launching. And the 4th book is a sequel to my artificial intelligence. So हमने एक artificial intelligence में book लिखी थी which is also available 1.5 years back. On the policy issues of artificial intelligence, not technical details about artificial intelligence. I have a background in AI because that was my when I went to the US and switched from physics to computer science. I was studying artificial intelligence, so I've been very interested in that field. लेकिन ये जो बुक है ये about policy है कि सोसाइटी के ऊपर क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है क्या होता है और उसके बारे में क्या हमारी पॉलिसी होनी चाहिए और क्या क्या पॉलिसीज़ में कमियाँ हैं तो ये दिस बुक इज़ ऑन विद 8-9 different authors have written this book, Indian authors, European authors. तो वो book भी launch होगी. So these are 4 new books and उनके पहले जो big one थी वो है Snakes in the Ganga. All these books are available. And I will after the Q&A, after this event is over, I'll be sitting there signing anybody who wants me to sign their copy. I'll be happy to sign. So with that I will conclude and will be happy to take any questions that people may have. Namaste and Jai Shri Ram to all of you.